Hello students and welcome back. In this video we are going to practice some of the questions that are related to the topic that we have discussed earlier, that was line, segment, ray and a simple line. All right, so these are the examples that we are going to practice. We have a scale, a measuring scale over here, and we are going to measure the length of the line that you can see over here. Okay, line segment आप देख सकते हैं, and we are going to measure और उसको हम देखेंगे ये कितना सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में है. ठीक है, we have learned about the measurements in the previous lesson. All right, so let's discuss. इसमें हम देख सकते हैं it's starting from 0 point and it's up till 3, लेकिन 3 से भी it's going 1 point forward, right? तो हम कहेंगे ये क्या है, it's actually 3 centimeters and 1 millimeter. alright, हम इसको ये कहेंगे. इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस वन. और इसमें आप देख सकते हो स्केल ड्रॉ हुआ है एंड द लाइन सेगमेंट इज गोइंग आफ्टर द नंबर 4. ठीक है, आगे जा रहा है, एक्सटेंड हो रहा है. तो हम इधर से देखेंगे 4 के आगे कितने पॉइंट्स जा रहा है. ठीक है, 1 2 3. ठीक है, तो 3 पॉइंट्स, इट्स एक्चुअली 4 पॉइंट्स. तो हम इसको क्या कहेंगे कि दिस इज एक्चुअली हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, इट्स 4 centimeters. And how many milliliters that we have counted, it's 4 millimeters. All right, let's look at the next example and we can see that on the scale it's over here, right? So that means हमारे centimeters जो लिखे हुए हैं that is 2 centimeter. alright, तो हम यहाँ लिख देंगे देखिए it's 2 centimeter. और कितने millimeters हैं, let's count. 1 2 3 4 5 6. so it's 6 millimeters. हम यहाँ लिखेंगे it's 6 millimeters. alright, let's look at the next example. और इस scale में you can see starting from 0 1 2 3. 3 जो है वो whole numbers हैं. ठीक है, इसमें that means कि 3 is the centimeter that is shown on the scale. और उसके बाद it's going over here, यहाँ पर आ रहा है. ठीक है, इसको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 and 6. so it's again 6 millimeters. 3 centimeter and 6 millimeters. Let's look at the next one, and it is going up till 5 and on the scale, and then it stops at the this place, right? So if we write the centimeters is actually 5 centimeter, and if we count the millimeters on the scale, it's actually 1 and 2 millimeters. so we write over here that's 2 millimeter. all right, I hope you guys have scales in your home and you can draw different lines and then put the scale on it using the centimeters and the millimeters to check the measurements of the different lines that you have drawn. It's a practice for you guys, and it will make you more efficient in finding out the length of the line using the scale. all right. Moving on, and we're going to practice some more questions, that is measure the length of the following lines. ठीक है, ये lines आपको बताई हुई हैं. इसके साथ I have drawn the scale because आप लोगों को मुश्किल ना हो इसको करते हुए आइडेंटिफाई. ठीक है, M से लेके N तक उन्होंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया हुआ है, and you have to find out the measurements of this line, right? अच्छा, वन मोर थिंग, व्हेन यू आर यूजिंग द स्केल, अगर आपका पॉइंट सेगमेंट लाइन सेगमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, राइट, यू मेक श्योर कि आप स्केल का जो जीरो है, जीरो पॉइंट है, यू पुट दैट ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, आप जीरो से स्टार्ट करेंगे, देन यू विल स्टार्ट काउंटिंग, और इसको स्ट्रेटली जो है वो आप अपनी लाइन पर इसको प्लेस करेंगे स्केल को, ताकि आप इसकी मेजरमेंट्स को देख सकें. ठीक है, अब यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है जीरो से, राइट.
ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और इट्स मूविंग अप टू n line segment that ends at 4. ठीक है, so we'll say how many centimeters are these. ये कितने सेंटीमीटर की लाइन है? This line segment is of 4 centimeter. Alright. Okay, so we have another line segment जो कि यहाँ से start हो रही है at this point, and you can see कि I have placed the 0 right below the line segment or the end point R. और इसके बाद आप इसकी रीडिंग देखेंगे and you can see it's 6. ठीक है, 6 के बाद जाके it's over here in the middle, 6 और 7 के दरमियान में है, right? तो आप क्या कहेंगे कि it's actually 6 centimeter और उसके बाद मिलीमीटर्स की आप रीडिंग करेंगे, ठीक है, and it's in the middle, so it is 5 millimeter. All right. Okay, moving on to the next example that says which line is the bigger, MN or RS? यानी इन दोनों में से कौन सी लाइन बिगर है? 4 सेंटीमीटर बिगर है या 6 सेंटीमीटर 5 मिलीलीटर्स बड़ी है? Obviously, the one that has more reading is the longest one and the bigger one, that is the line segment RS. Alright, this is how you're gonna write the answer. Next, what we are gonna do is we are gonna draw a line in the given space and find its length. ठीक है, आप जो है एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसका जो है आप फाइंड करेंगे, लेकिन लाइन आप कहाँ से ड्रॉ करना शुरू करेंगे? ड्रॉ फ्रॉम हियर. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लाइन एंड पॉइंट होगा. ठीक है, और एंड पॉइंट होने के बाद let's draw the line from here. All right, so I'm drawing the line up till here. ठीक है, so if I draw this line, what is going to be the measurement? You can see over here it's up till 10 centimeters. So I can write over here that this line segment is 10 centimeter. और इन एंड पॉइंट्स को आप खुद से भी नेम दे सकते हैं, कोई भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख सकते हैं. आप इसको लिख सकते हैं C and D. That this line segment, that is C and D, इसकी लेंथ क्या है? It's equal to 10 centimeters. Alright. Likewise, अगर मैं इसको let's draw it in the different color. Let's draw another line. Or this time I'm going to draw it over here. यहाँ से हम start कर रहे हैं and let's move. Okay, 10 तक हमने फिर से draw कर दिया. Let's make it a little shorter. Okay, so this is the line that I have drawn, and let's name this line segment. We're gonna call this X and Y. Alright, और इसकी हम देखेंगे मेजरमेंट कहाँ तक जा रही है. So you can see it's up till here. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है. मेक श्योर हमेशा 0 से स्टार्ट हो आपकी काउंटिंग यानी रीडिंग, और आप उसको नेक्स्ट देखें कि वो कहाँ तक जा रहा है. सो वी हैव 7 ओवर हियर जो कि सेंटीमीटर है, और उसके बाद वी हैव अ रीडिंग इन मिलीमीटर्स. ठीक है, सो वी विल राइट ओवर हियर दैट एक्स एंड वाई लाइन सेगमेंट is actually equals to 7 centimeter, and then when we'll count the rest of the millimeters, it's 1 2 3 4 and 5. Okay, so it's 5 milliliters millimeters. Okay, अच्छा जी, let me remind you that on the scale the reading of millimeter is very small, so you have to keep your focus on the scale to do the reading. All right, we have learned in the last chapter that 1 centimeter was actually equals to 10 millimeters. ठीक है, हमने ये पढ़ा था
1 centimeter is actually equal to 10 millimeters. So keep that in mind, और इसको mind में रखते हुए you're gonna do the reading on your scale. See you guys in the next video.